हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी और डेफिनेशंस की टू टाइप्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें एडिशन प्रॉपर्टीज़ भी थी और मल्टीप्लिकेटिव स्केलर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी थी और कुछ एग्जांपल भी हमने उसके किए थे। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास वेक्टर स्पेस के। उसके लिए एक एग्जांपल है, सो दैट द सेट Q √2 equal to a plus b under root 2 such that ab belongs to Q, means set of rational number. We have to show that this set is a vector space over set of rational number. With respect to composition, अब composition कौन सी है? a plus b under root 2 plus c plus d under root 2 equal to a plus c plus b plus d under root 2. मीन्स क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है ए और सी वो एक साथ ऐड होंगे और जो रैशनल पार्ट है अंडर रूट 2 वाला वो बी प्लस डी वो एक साथ हो जाएंगे। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है वो है ए प्लस बी अल्फा इंटू ए प्लस बी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा अंडर रूट 2 वेयर ए बी सी डी एज वेल एज अल्फा ऑल बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमने क्या किया, ये सेट ले लिया Q अंडर रूट 2 जिसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, एलिमेंट्स आर ऑफ द टाइप ए प्लस बी अंडर रूट 2 फॉर ए बी बिलोंग्स टू Q। तो उसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव द एडिशन प्रॉपर्टी एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम एसोसिएटिविटी देखते हैं। एसोसिएटिविटी में वी हैव टेक 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट a प्लस बी अंडर रूट 2 c प्लस डी अंडर रूट 2 एंड e प्लस f अंडर रूट 2। फर्स्टली लेट अस टेक फर्स्ट 2 एलिमेंट्स वन साइड, a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस c प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस e प्लस f अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट दोनों का ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी अंडर रूट 2 और जो थर्ड एलिमेंट है वो एज इट इज ई प्लस एफ अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू नाउ ए प्लस सी प्लस ई, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई प्लस सेकेंड पार्ट बी प्लस डी प्लस एफ अंडर रूट 2 के साथ है। इसको हमने स्टार इसको नेम डाल दिया है। नाउ टेक द लास्ट 2 एलिमेंट्स together, c plus d under root 2 plus e plus f under root 2 and a plus b under root 2 इनके एडिशन में हमने ले लिया है ये। फॉर दिस a plus b under root 2 plus c plus e plus d plus f under root 2, यानी कि पीछे वाले एलिमेंट्स हैं इन दोनों को ऐड एक साथ कर दिया और फर्स्ट एलिमेंट अलग है। नेक्स्ट स्टेप में हम तीनों को ऐड करेंगे, a प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस d प्लस एफ अंडर रूट 2। इसको हमने डबल स्टार नाम दिया है। फ्रॉम हेयर वी सी दैट स्टार एंड डबल स्टार हैव इक्वल वैल्यूज एंड देयरफॉर दीज आर द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वांटिटी and this quantity respectively. Since both right hand side quantities are same, therefore left hand quantity are also same and therefore associative property satisfied. Second property is commutativity. Commutativity, in commutativity we take 2 elements a plus b under root 2 plus c plus d under root 2. According to the composition which is given above, we add these 2 elements a plus b under root 2 plus c plus d under root 2 is equal to a plus c plus b plus d under root 2. Then we can write a plus c as c plus a and b plus d as d plus b under root 2, which gives c plus d under root 2 plus a plus b under root 2. Existence of identity element. Existence of identity element, for that we have there exists a 0 such that 0 is equal to 0 plus 0 under root 2 belongs to V, means this number element is also from the set such that a plus b under root 2 plus 0 plus 0 under root 2 is equal gives the a plus b under root 2 itself. Means when we add this element to the right of the a plus b under root 2 gives same, as well as when we add this element to the left, 0 plus 0 under root 2 plus a plus b under root 2 equal to a plus b under root 2 itself. In both the cases it gives the same element, therefore this is the 0 is the identity element.
inverse element, existence of additive inverse. For a plus b under root 2 for all belongs to v, there exists a minus a minus b under root 2 belongs to v, such that when we add both of these, a plus b under root 2 plus minus a minus b under root 2, it is equal to 0 plus 0 under root 2, means it gives the 0 element, means identity element. Therefore we get the additive identity when we add a plus b under root 2 to minus a minus b under root 2. It means minus a minus b under root 2 is the inverse element, additive inverse element of a plus b under root 2. Now we prove some scalar multiplication quantity properties. For a plus b under root 2 belongs to v, where alpha belongs to, and alpha belongs to q. When you multiply this alpha to this element, alpha into a plus b under root 2 is equal to alpha into a plus alpha into b under root 2 belongs to v, which it means when we multiply this alpha to the element also gives the element of the type which belongs to q under root 2, means this defines the scalar multiplication. For let us suppose two elements u is equal to a plus b under root 2 and v is equal to c plus d under root 2. For a, b, c, d, alpha, beta all are belongs to set of rationals. Now first property, which is the distributive property over addition in v. Alpha into u plus v gives the alpha into a plus b under root 2 plus c plus d under root 2, which is equal to alpha a. Firstly, you can add a plus a and c, b and d. Then we can multiply, or you can write alpha a plus alpha b under root 2, alpha c plus alpha d under root 2, which is equal to alpha u plus alpha v. It means when we multiply alpha, a scalar number, to u plus v, it gives the alpha u plus alpha v. Second property, it is the distributive property or addition in field. Field here is q, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पे हम शो करेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू ए प्लस बी अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ एंड अल्फा प्लस बीटा इंटू बी अंडर रूट 2 ऑन मल्टीप्लीकेशन वी गेव अल्फा ए प्लस बीटा ए प्लस अल्फा बी अंडर रूट 2 प्लस बीटा बी अंडर रूट 2 which gives alpha a plus alpha b under root 2. फर्स्ट अल्फा वाले पार्ट ले लिए एंड बीटा ए प्लस बीटा बी अंडर रूट 2 बीटा वाले पार्ट लिए. यहाँ से अल्फा जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा अल्फा इंटू यू बच जाएगा यानी कि ए प्लस बी अंडर रूट 2 और यहाँ से बीटा जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी अंडर रूट 2 यानी कि यू बचेगा. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा इंटू यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा और यू की वैल्यू हमने पुट की अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा ए प्लस अल्फा बीटा बी अंडर रूट 2 विच गिव्स द अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बी अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा यू. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड द लास्ट स्केलर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी गिव्स द 1 इंटू यू इज इक्वल टू 1 इंटू यू की वैल्यू ए प्लस बी अंडर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा विच इज इक्वल टू यू इट सेल्फ. हैंस ऑल एडिशन प्रॉपर्टी एज वेल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड एंड इट मीन्स क्यू अंडर रूट 2 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू. नाउ देयर आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस. फर्स्ट इज a into 0 is equal to 0. Means when we multiply 0 element to a scalar number for where a belongs to field, then it gives the 0 element. Since a into 0 is equal to a into 0 plus 0, you can write 0 as 0 plus 0 and on multiplication a into 0 plus a into 0 which is equal to 0 plus a into 0 which is equal to a0 plus a0 which gives us 0 is equal to यानी कि ऑन राइट कैंसिलेशन ला भी आप इसको लिख सकते हैं. राइट कैंसिलेशन ला राइट से a0 कैंसिल हुआ तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 और a इंटू 0 इज इक्वल टू 0
property satisfied. Second is 0 into u. This 0 multiplied by a scalar number. Now this 0 is multiplied by a element of the vector space. 0 into u also gives 0. Since you know 0 plus 0 is equal to 0, and 0 plus 0 into u, post multiplication by u, is equal to 0 into u, or on opening the bracket 0u plus 0u is equal to 0u, or you can write 0 into u plus 0 into u is equal to 0 into u plus 0. On left cancellation law, using left cancellation law here, we get 0 into u is equal to 0. The property satisfied. Third property is minus 1 into u is equal to minus u itself for all u belongs to v. Since we know that minus 1 into u plus u is equal to minus u, minus 1 into u is equal to 1 into u, you can write. Or this means you can write minus 1 into u plus u, or taking u common from here, minus 1 plus 1 equal into u. Minus 1 plus 1 is 0, or you can write minus 1 into u plus u is equal to 0 into u, or this means minus 1 into u plus u is equal to 0 itself. This means minus 1 into u is equal to minus u, and the property satisfied. The next property is a into minus u gives minus a into u, or means when we multiply minus to the element, it gives the whole element minus. This is equal to minus a into u. All are same for all a belongs to f and u belongs to v. Since we know that a into u plus minus of u is equal to, on multiplication, gives au plus a of minus u. This implies a of 0 is equal to au plus a of minus u. This means a into 0, 0 is equal to au plus a into minus u. And a into minus u is the additive inverse of au, and it means you can write a into minus u is equal to minus a of u. Also a into bu is equal to ab into u for all ab belongs to f and u belongs to v. This means minus of au is equal to minus a of u. Thus minus a of u is equal to minus au is equal to minus a of u. All the three parts are the same. Fifth property is a into u minus v. A into u minus v is equal to au minus av. For all a belongs to f and uv belongs to v. For this, a into u minus v is equal to a into u and plus minus of v. इसको ब्रैकेट में हमने लिखा है, which is equal to au plus a of minus v, और au plus av minus को हमने एक साथ अलग किया है, which is equal to au minus av, and the property satisfied. The sixth property is au is equal to 0. Either a equal to 0 or u equal to 0, means when product of two elements a and u is 0, one of them must be 0. Let us suppose that a is equal to 0 and a is non-zero. We have to prove that u is 0. Since a is non-zero, it means a inverse exists. A inverse exists means a inverse of au is equal to a inverse into 0, which gives a inverse into a into u is equal to 0, and this is the identity element. It means u is equal to 0. Now let us suppose that again au is equal to 0 and u is non-zero. We have to show that a is 0 now. For this, on contrary, let us suppose that a is non-zero. Since a is non-zero, then a inverse exists. Again, then a inverse au is equal to a inverse into a into u equal to 0. A inverse into a means 1, identity into u is equal to 0. This is equal to u means u is equal to 0, which is a contradiction, since we assume that u is non-zero, and therefore a must be 0 or a is equal to 0.
On the same line, we can prove that also the two properties, when AU is equal to BU and U is non-zero, it means A is equal to B. And similarly, when AU is equal to AV and A is non-zero, then U is equal to V. In this way, we can prove all the properties, and these are the general properties which are commonly used to show a vector space and in some theorems related to vector space. सब स्पेस इसके बाद आता है सब स्पेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.